In this session, we will discuss the theory of machine for the gate point of view. This is also a 2 hours video in which I try to cover the theory of machine basic concepts, the formulas and how you will solve the numerical, right? तो ये आपका एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, ये जो 2 घंटे का वीडियो रहेगा. एंड थ्योरी ऑफ मशीन के अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, देन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द थ्योरी ऑफ मशीन विल बी द योर फर्स्ट वन इज द सिंपल मैकेनिज्म, देन द 4 बार मैकेनिज्म. देयर यू मे आस्क अ क्वेश्चन इन दैट, राइट? उसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है. द सेकेंड वन इज द Coriolis एक्सेलरेशन. Coriolis एक्सेलरेशन पे एक आपको क्वेश्चन मिल सकता है गेट के अंदर. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन इज योर वाइब्रेशंस. वाइब्रेशन पे तो आपका क्वेश्चन 100% यू विल गेट अ क्वेश्चन इन वाइब्रेशन, देयर इज नो डाउट इन इट. सो विल ट्राई टू कवर द बेसिक पार्ट ऑफ द थ्योरी ऑफ मशीन. सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरी ऑफ मशीन. द फर्स्ट, इफ यू सी द योर definition of a kinematic pair, the kinematic pair is that pair if the relative motion between the links is a constrained motion. You can say a pair to be a kinematic pair if the relative motion between the different links which are connected with each other is a constrained motion. Constrained motion means you the meaning of constrained motion is that you will get a single output for irrespective of the इनपुट. यू विल गिव एनी नंबर, एनी इनपुट, आप कैसा भी इनपुट देंगे आप, लेकिन आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक आउटपुट मिलेगा. दैट टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज योर कंस्ट्रेन्ड मोशन. सो इफ पेयर्स की बात करें, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पेयर. वन इज द लोअर पेयर, हायर पेयर एंड योर रैपिंग पेयर. सो द लोअर पेयर, इफ यू से दैट लोअर पेयर इज द पेयर विच आर हैविंग सरफेस कॉन्टेक्ट्स, राइट? लोअर पेयर वो पेयर होते हैं जिनके दो पेयर्स के बीच में अगर सरफेस कांटेक्ट है, सरफेस इज कांटेक्टिंग, देन दैट पेयर इज नोन एज लोअर पेयर. हायर पेयर इज योर पॉइंट और लाइन कांटेक्ट, राइट? दिस इज ए हायर पेयर. जस्ट लाइक इफ यू कैन से this marker is placing on my hand, then this line is in contact with this my hand, so it is a your higher pair. And wrapping pair, for example your belt drive, right? Belt drive, then that pair is a wrapping pair. Wrapping pair is there, so that is a belt drive. Example of wrapping pair is a belt drive. Wrapping pair is almost equal to your higher pair. We will consider the wrapping pair as an higher pair. So these are the 3 types of pair we have, and we know that one higher pair is equivalent to the 2 lower pairs, right? If there is any one higher pair is existing in a mechanism, किसी mechanism के अंदर अगर आपको higher pair मिलेगा, so you can consider it to be equivalent to the 2 lower pairs. और अगर बात करें, we have self closed pair. Self closed pair are those pair which are having permanent contact. For example, sliding, turning, sliding pair, turning pair. These are the permanent contact types, so you can say that they are the self closed pair. And another one is the forced closed pair. For example, your cam and follower, right? In a cam and follower, the follower is forced to touch with the cam, so that is the forced closed pair. Now the important topic in the theory of machine simple mechanism chapter is your degree of freedom. What is the meaning of degree of freedom? We see that the degree of freedom in thermodynamics, it is similar to that. The degree of freedom is the minimum number of independent variables required to define the position or the motion of a system. If you want to define the system, then what is the minimum number of independent, that is important, minimum number of independent variables, right? There what we say in thermodynamics, minimum number of intensive independent properties required to define the state of a system. Here we can say same definition, minimum number of independent variables which are required to define the position or the state of a system. So the degree of freedom will be equal to 6 minus restraints. We know that in any body, अगर कोई भी body है आपका, उसके पास 6 motion होते हैं. 3 translation in this direction, vertical direction, and in this direction 3 translation and 3 rotation. Rotation about 3 different axes, x, y and z. So we have total 6 motions minus restraint. Restraint means the number of motions which are not permitted. If in that machine और किसी भी बॉडी में अगर आप कुछ मोशंस को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो ना आपका कुछ ट्रांसलेशन मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गई या कुछ रोटेशन मोशन रेस्ट्रिक्ट हो गई, so the degree of freedom is the 6 minus that restraints.
So we can say that in the degree of freedom we can say that the degree of freedom of a lower pair, one lower pair is having 1 degree of freedom, one higher pair is having 2 degree of freedom, and one spherical pair is having 3 degree of freedom. This you have to remember, ये आपको याद रखना है. एक लोअर पेयर अगर कहीं दिखेगा इसका मतलब एक लोअर पेयर का 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, वन हायर पेयर इज हैविंग 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एंड वन स्फेरिकल पेयर इज हैविंग 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम. नाउ द इंपॉर्टेंट, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना आ सकता है गेट के अंदर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है. तो वी आर यूजिंग दिस Kurzbach equation, that this equation is your degree of freedom is equal to 3 into L minus 1 minus 2J minus H minus FR. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. इस फॉर्मूले में L is the number of links, J is the number of binary joint. Binary joints are those joint at which 2 links are connected. किसी भी joint पे अगर आपके 2 link connected हैं तो that joint is known as binary joint. Tertiary joint means or ternary joint means 3 link आपके connected रहेंगे. Quaternary means your 4 links are connected at that joint. So J is the number of binary joint, H is the number of higher pair which is existing in the system, and FR is the redundant motion, or you can say the number of those motions which are not part of the mechanism. वो mechanism के part ही नहीं है, वो उस motion से, उस link के motion से आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. So that is the redundant motion, so you have to subtract it. So the degree of freedom will be equal to 3 into L minus 1 minus 2J minus H minus FR. So if in a system binary joint is there, J is the binary joint. If in any system, अगर किसी भी kinematic chain की बात करें, तो in any kinematic chain, if there is a ternary joint, so you can replace that ternary joint is equal to 2 binary joint, and 1 quaternary joint is equal to 3 binary joint. आप इसको replace कर सकते हैं और इस फॉर्मूले में रखने के लिए. इसमें हमको binary joint रखना है, तो 1 ternary joint अगर आपको कहीं दिखता है तो उसमें उसको आप लिख सकते हैं इट इज 2 बाइनरी ज्वाइंट, एंड 1 क्वाटरनरी ज्वाइंट दिखता है आपको तो उसको आप लिख सकते हैं 3 बाइनरी ज्वाइंट. सो इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एनी चेन, किसी भी काइनेमेटिक चेन का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है, दैट मींस इट इज ए फ्रेम और स्ट्रक्चर. फ्रेम और स्ट्रक्चर मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मींस आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी मोशन नहीं मिलेगा. सो इट विल ट्रीट एज ए फ्रेम और स्ट्रक्चर. वो एक फ्रेम की तरह काम करेगा, जस्ट टू सपोर्ट द लोड और जस्ट टू सपोर्ट द टॉर्क, राइट. वो टॉर्क को ट्रांसमिट कर सकता है, टॉर्क को आपको सपोर्ट कर सकता है, एज अ सपोर्ट वो काम करेगा, जस्ट लाइक योर ट्रसेस. अगर ट्रसेस की बात करें, ट्रसेस भी एक ऐसा ही फ्रेम और स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके लोड को सपोर्ट करता है या लोड को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसमिट कर सकता है. सो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 0 आता है, देन दैट स्ट्रक्चर इज ए फ्रेम और स्ट्रक्चर. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम लेस देन 0 आता है, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है, देन दैट इज ए काइनेमेटिक चेन. काइनेमेटिक चेन आप उसको बोलेंगे जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, मतलब आपको सिर्फ एक आउटपुट मिलेगा एक इनपुट के लिए. तो if the degree of freedom is greater than 0, right, or greater than 1, you can say if the degree of freedom is greater than 1, then it will be the unconstrained chain. Unconstrained chain means आपके पास 2 अलग अलग आउटपुट आ सकते हैं. So that is the meaning of the degree of freedom values. नेक्स्ट इज योर ग्रैबलर्स इक्वेशन. ग्रैबलर इक्वेशन आपका वैलिड होता है जब आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है. किसी भी काइनेमेटिक चेन का अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 एंड इन दैट चेन इफ द हायर पेयर इज 0, देन ओनली दिस ग्रैबलर इक्वेशन इज वैलिड. अगर इस फॉर्मूले में FR को हटा दो, इस फॉर्मूले में अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम को 1 रख देंगे एंड H को 0 रख देंगे, देन द इक्वेशन विल बी 3L minus 2J minus 4 which is equal to 0. तो ये इक्वेशन आपको याद रखना है. अगर किसी भी मैकेनिज्म, किसी भी चेन के अंदर इफ देयर इज अ नंबर ऑफ लिंक्स इज L, राइट, किसी भी काइनेमेटिक चेन के अंदर इफ द वैल्यू ऑफ लिंक इज L, लेट अस से 4 लिंक्स, 5 लिंक्स, 6 लिंक्स होते हैं, तो उस चेन के नंबर ऑफ इन्वर्जन वुड बी लेस देन और इक्वल टू L. नंबर ऑफ इन्वर्जन का मतलब अगर आपके पास एक काइनेमेटिक चेन है तो आप उस चेन से अलग अलग मैकेनिज्म बना सकते हो. उस चेन के अलग अलग लिंक्स को फिक्स करके आप अलग अलग मैकेनिज्म बना सकते हो. तो एक चेन से आप बहुत सारे मैकेनिज्म बना सकते हो. तो उन मैकेनिज्म्स, उन नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स को हम बोलते हैं इन्वर्जन. सो अगर किसी भी लिंक के पास, किसी भी चेन के पास अगर नंबर ऑफ लिंक इज L, देन द नंबर ऑफ इन्वर्जन वुड बी लेस देन और इक्वल टू L. वाई लेस देन? कि हो सकता है कि 2 अलग अलग लिंक्स को फिक्स करके आपको सेम मैकेनिज्म मिल जाए, तो इट मे बी पॉसिबिलिटी. सो द नंबर ऑफ इन्वर्जन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू L, बट इट मे बी लेस देन L बिकॉज देयर इज अ चांस दैट कि अगर अलग अलग इफ यू फिक्स द डिफरेंट लिंक्स, देन यू विल गेट द सेम मैकेनिज्म.
The next first mechanism which we want to study is the 4-bar mechanism. 4-bar mechanism means you have the 4 links which are joined with the lower pairs, right? These are the 4 joints, binary joints. This is the input link, this is the output link, and this third link is the coupler, right? And one link is fixed, right? To get any mechanism we have to fix one link, so that is a fixed link. अगर 4-bar mechanism में if any link is rotating, if complete rotation is possible, तो उस लिंक को बोलते हैं क्रैंक. और अगर पार्शियल रोटेशन है, दिस इज अ पार्शियल रोटेशन, इफ इन एनी लिंक दैट पार्शियल रोटेशन इज देयर इन द 4-bar mechanism, तो उस लिंक को बोलते हैं रोकर. रोकर मीन्स पार्शियल रोटेशन, क्रैंक मीन्स कंप्लीट रोटेशन. तो 4-bar mechanism के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रूल इज और लॉ इज ग्रासॉफ लॉ. गेट में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस ग्रासॉफ लॉ के ऊपर, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे. ग्रासॉफ लॉ क्या कहता है? इन एनी 4-bar mechanism to obtain the continuous relative motion, if you want the continuous relative motion between the links, so ग्रासॉफ law says that the sum of स्मॉलेस्ट प्लस द लार्जेस्ट लिंक. आपके पास 4 लिंक है, इनमें से एक सबसे स्मॉलेस्ट होगा, एक लार्जेस्ट लिंक होगा. देन द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लस लार्जेस्ट लिंक शुड बी लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 लिंक्स. बाकी के जो 2 लिंक्स हैं उनके सम से ये ज्यादा या इक्वल होना चाहिए. देन ओनली फॉर दिस कंडीशन ओनली यू विल गेट द कंटिन्यूअस रिलेटिव मोशन. सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक मैकेनिज्म दे देंगे, आपको बोलेंगे कि आपको डबल क्रैंक चाहिए या क्रैंक रोकर मैकेनिज्म चाहिए या डबल रोकर मैकेनिज्म चाहिए. आपसे अलग अलग मैकेनिज्म्स पूछे जा सकते हैं. तो अगर एक चीज बात याद रखेंगे कि आप कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. एक चीज याद रखेंगे, किसी भी लिंक के लिए, किसी भी चेन के लिए द बेस्ट पोजिशन इज योर फिक्स्ड पोजिशन, राइट. अगर बेस्ट पोजीशन की बात करें तो इट इज अ फिक्स्ड पोजीशन एंड बेस्ट लिंक फॉर द रोटेशन इज योर क्रैंक, राइट. वी कैन से द बेस्ट लिंक फॉर द रोटेशन इज योर क्रैंक, राइट. और द स्मॉलेस्ट लिंक, यू कैन से बेस्ट लिंक फॉर द रोटेशन इज योर स्मॉलेस्ट लिंक, small link. That means if the best link is at best position, means if the smallest link is at the fixed position, you will always get double crank. This you will remember. अगर आपका smallest link आपके fixed position पे है, you will get the double crank mechanism. If the smallest link is adjacent to the fixed link, आपने कोई और link fix किया है, उसके adjacent में, उसके बगल में आपका smallest link है, then you will get the crank and rocker mechanism. One link, this input or output, one is in complete rotation and one link is in partial rotation. And if the smallest link is at the कपलर, अगर आपका स्मॉलेस्ट लिंक कपलर की तरह एक्ट कर रहा है, आपका बेस्ट लिंक, आपका वर्स्ट प्लेस दैट इज द कपलर, तो अगर आपका बेस्ट लिंक कपलर की पोजीशन पे है, देन यू विल गेट द डबल रोकर. मींस बोथ द इनपुट एंड आउटपुट लिंक विल बी इन पार्शियल रोटेशन, आपको पार्शियल रोटेशन मिलेगा, देन इट विल बी द डबल रोकर. आप ये चीज याद रखेंगे, ये जो तीनों कंडीशंस हैं, these 3 conditions are only valid when the Grashof law is valid. अगर आपका ये Grashof law valid है तभी ये कंडीशन आपकी पॉसिबल है, राइट. कि अगर स्मॉलेस्ट लिंक, फिर से रिवाइज करेंगे, स्मॉलेस्ट लिंक अगर फिक्स है तो डबल क्रैंक, स्मॉलेस्ट लिंक फिक्स लिंक के बगल में है, देन क्रैंक एंड रोकर. स्मॉलेस्ट लिंक आपका फिक्स लिंक के अपोजिट है और कपलर की जगह पे है, यू विल गेट द डबल रोकर. एंड इफ द Grashof law इज नॉट सेटिस्फाइड, हम कहते हैं अगर आपका Grashof law सेटिस्फाई नहीं करता है, देन इसका मतलब कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्लस द लार्जेस्ट लिंक इज ग्रेटर देन द सम ऑफ अदर 2 लिंक्स, दैट इज द इनवैलिड ऑफ योर Grashof law. तो आप किसी भी लिंक को फिक्स करो, कुछ भी करो, इट इज नॉट मैटर, इट डजंट मैटर, यू विल ऑलवेज गेट डबल रोकर. आपको हमेशा डबल रोकर ही मिलेगा अगर आपका Grashof law वैलिड नहीं है. तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखेंगे, यहां से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है गेट के अंदर. The next topic of our discussion is the crank and slotted lever mechanism. The crank and slotted lever mechanism is the inversion of your single slider mechanism in which your connecting rod is fixed. तो इसमें थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस आपके आते हैं गेट के अंदर. दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो. तो एक बार देख लेते हैं crank and slotted lever mechanism काम कैसे करता है. This is the connecting rod. ये आपका connecting rod है which is fixed. This link is crank. This red link is the slotted bar and there in the slotted bar there is a slider. So this crank is rotating, ये crank rotate करेगा तो this your slotted bar will
रेसिप्रोकेट, ये आपका रेसिप्रोकेट करेगा। तो हम लोगों ने बोला दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ दिस स्लोटेड बार, दैट इज B1 एंड B2, ये यहां से ऐसे मूव करेगा। सो इफ दिस अल्फा, दिस एंगल सबटेंडेड बाय दिस crank alpha is known as your return stroke angle and this beta is known as your cutting stroke angle। तो क्या होता है, यहाँ पे एक कटिंग टूल होता है, जब ये आगे मूव करेगा फ्रॉम दिस बीटा, जब ये आगे बढ़ेगा तो आपका कटिंग प्रोसेस होगा, मशीन कटिंग होगा, एंड व्हेन इट विल कम बैक तो इसने जो एंगल सबटेंड किया दैट इज अल्फा। तो द स्ट्रोक लेंथ ऑफ दिस, जो ये स्ट्रोक लेंथ होगा, ये कटिंग स्ट्रोक जो होगा, द स्ट्रोक लेंथ का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट इज इक्वल टू 2 into length of the slotted bar, this length of the slotted bar into length of this crank divided by the length of this connecting rod। ये आपको याद रखना है। कभी कभी पूछ लेता है what is the quick return ratio। The quick return ratio is this angle beta upon alpha, and you know this beta is always greater than alpha, so it will always greater than 1। कभी कभी पूछ लेता है what is the ratio of cutting time upon the ratio of cutting time upon return time, that is also equal to B upon alpha, and you know that B plus alpha will be equal to 360 degree, right? B plus alpha will be equal to 360 degree। So this is the crank and slotted lever mechanism। Now the topic is your velocity and acceleration। अगर किसी mechanism के अंदर number of links are there, so they have, when they are moving they have some velocity and acceleration। basic चीजें बात करेंगे velocity and acceleration के। If there is a number of links is L in a mechanism, किसी भी chain के अंदर if the number of link is L, then the number of I center will be equal to L into L minus 1 divided by 2। There is a very important theorem, Kennedy theorem, in the velocity and acceleration analysis। The Kennedy theorem says that for a relative motion, अगर किसी भी mechanism या chain के अंदर if there is some relative motion is there, then the 3 instantaneous center of rotation of any 3 links will be in the straight line। To obtain a relative motion in a mechanism, you can say that the 3 instantaneous center of 3 links will be in the straight line। So I can say that the velocity of m and n is the link, the relative velocity of link m with respect to n। There are 2 links m and n, so the relative velocity of link m with respect to n is equal to omega n, the angular velocity of link n, into the distance of I mn and I1n। One is the link fixed, one link is the fixed link, you know that here one is the fixed link, and there are 2 other links, that is link m and n। So we have 3 links, 1 m and n, so we have 3 instantaneous center, that is here I1m, I1n and IMn। There are 3 instantaneous center here, that is I1m, I1n, IMn, right? So they must be in the straight line for any relative motion if you want to obtain। So this formula you have to write, you have to remember that omega n into the distance between Imn into I1n is equal to omega m, the angular velocity of the link m, into the distance between instantaneous center Imn and I1m। So इसमें से आपको कोई 2 चीजें दी होंगी, तीसरा आपसे पूछेगा, then you will get the answer, right? So if it will ask what is the direction of omega m and omega n, right? What is the direction of the link omega, or what is the direction of omega for the link m and n? So we can say that if the instantaneous center I1m and I1n are on the same side of mn, राइट। अगर ये दोनों आपके सेम साइड में होंगे, सेम साइड मतलब सपोज वी हैव थ्री लिंक्स, लिंक 1 2 and 3। सो इफ इट इज द केस दैट इफ दिस इज द I23, दिस इज योर I12 and this is your I13। if I13 and I12 on the same side of I23, then the direction of the omega m and omega n, or omega 2 and omega 3 will be same। if they are on the different side, suppose if this is your I23, this is your I13 and this is your I12, so if they are on the opposite side of the Imn, so the direction of omega 2 and omega 3 will be different। if one is clockwise, the other one will be anti-clockwise।
The most important concept of your velocity acceleration is the Coriolis acceleration. यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. The Coriolis acceleration is associated with the slider when the slider is sliding on a rotating link. अगर आपका स्लाइडर एक लिंक के ऊपर अटैच है, उस लिंक के ऊपर वो स्लाइड कर रहा है and that link is rotating. Suppose in this case if you can say that this slider is sliding on this link and this slotted bar is rotating, then for this slider one extra acceleration will come into picture. That is known as Coriolis acceleration. The magnitude of Coriolis acceleration will be equal to 2 into v into omega. This is the formula of magnitude of Coriolis acceleration. V is the sliding velocity of this slider and omega is the angular velocity of this slotted bar or angular velocity of that link on which slider is sliding. जिस लिंक के ऊपर स्लाइडर स्लाइड करेगा उस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा एंड v is the sliding velocity of slider. And they may ask you what is the direction of Coriolis acceleration. For the direction of Coriolis acceleration, you just rotate the velocity vector in the sense of omega by 90 degree. You just rotate the velocity vector in the sense of omega by 90 degree. Suppose if this is the case, let us say this is the case, here we have a slider. Now at present slider is moving with velocity v in this direction and omega is in anti-clockwise direction. So the direction of Coriolis acceleration is you just rotate the direction of velocity by 90 degree in the anti-clockwise direction. So this will be the direction of Coriolis acceleration. Right? You just rotate the velocity vector in the direction of omega by 90 degree. Next is your mechanical advantage. Mechanical advantage is the ratio of output force upon input force, right? And you can say it is the output torque upon input torque. You can also convert this formula in your form of mechanical efficiency. Mechanical advantage is equal to your input velocity upon output velocity into mechanical efficiency, or angular input velocity divided by angular output velocity into mechanical efficiency. बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने के, बस फॉर्मूला को याद रखेंगे. And mechanical advantage for the toggle position is infinity, right? Mechanical advantage for the toggle position is infinity. So this is your velocity and acceleration chapter.